आपको फील हो रहा है जब भी आप लिखते हो लाइक ऐसे अटेम्प्ट करते हो तो अटेम्प्शन में क्या आपको ये लगता है कि आपका वर्ड काउंट कम है और इसकी वजह से आप नंबर ऑफ आइडियाज ऐड करते जाते हो और आपका सारा राइटिंग जो है स्क्रिप्ट या फिर आप जो राइटिंग ऐसे है वो मैसअप हो जाता है? अगर आपका आंसर यस है और मोस्टली स्टूडेंट को यही दिक्कत होती है, दैट इज द सेम क्वेश्चन और सेम इश्यू व्हिच इज बीइंग फेस्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इवन इफ यू आर फेसिंग द सेम इश्यू देन दिस वीडियो इज फॉर यू। स्टे ट्यून एंड तक देखना क्योंकि ये जो आपकी प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। And the sixth one is but. ये भी word like I have seen many students using like we have no choice till today। आज आप जो वीडियो देख रहे हो तो आज तक आपके पास उससे कोई पॉसिबल ही नहीं था कि इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो नाउ द वर्ड इज बट। नंबर 6 but, बट उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉसिबल रिप्लेसमेंट इज however। बट को हम however करते हैं तो एक ही हुआ ना, उसे अभी आप थोड़ा आगे चलिए। However, it should be noted that, because को however it should be noted that ऐसे यहाँ पे रिप्लेस हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, however it should be noted that this change is required significant investment। Second example, however it should be noted that long term success depends on consistent efforts। Second replacement देखते हैं बट का is that nevertheless one must consider that। बट का लाइक nevertheless डालते हैं लेकिन उसे अभी और आगे ले जाइए। nevertheless make it more lengthier। formal and lengthier is nevertheless one must consider that। एग्जाम्पल देखिए, nevertheless one must consider that cultural differences plays a role in communication style or communicating style or the way people behave and communicate with each other। Second example, nevertheless one must consider that technology alone cannot solve social inequalities, social issues। with the help of technology it is not possible we could say solve the social inequality, social issues or kind of problems। Next, third solution or third replacement is that being said it is essential to acknowledge that। it is essential to acknowledge that। Example, that being said it is essential to acknowledge that not all solutions will work universally। it is obvious the common like a single solution cannot be functions properly all over the globe। so this being said it is essential to acknowledge that not all solutions will work universally। Second example, that being said it is essential to acknowledge that practice is necessary for meaningful progression or meaningful progress। Next, on the contrary, सिंपल है, कई जगह यूज करते ही है और कई जगह इट इज कॉमन फ्रेज लाइक ऑन द कॉन्ट्ररी। फॉर एग्जांपल, ऑन द कॉन्ट्ररी some argue that stricter laws could stifle innovation। it will hold or it will slower the progression of innovation। it is called the stricter laws could stifle the innovations। A second example, on the contrary, many believe that traditional methods still hold significant values। and the last is like notwithstanding the fact that। notwithstanding ये जो पूरा फ्रेज है एक साथ आना चाहिए लाइक not, with एंड स्टैंडिंग, तीनों के बीच में आप गैप नहीं रखोगे। इट इज अ फुल लेंथ, ओके, एक साथ ही विदाउट स्पेसिंग। सो नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट, एग्जांपल, नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट चैलेंजेस एग्जिस्ट, प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द फील्ड। चैलेंज थे फिर भी प्रोग्रेस अपनी जगह उसने की है। नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट रिसोर्सेस आर लिमिटेड, द प्रोजेक्ट हैज अचीव्ड रिमार्केबल रिजल्ट।
ऐसे यहाँ पे लाइक पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं रिप्लेसमेंट्स। The next word is if, a conditional clause. Conditional clause be like question ये आता है कि in the writing and speaking we have to use a range of sentences to generate a range of grammar की range maintain करने के लिए। तो mostly I have seen that while in writing and speaking, majority of the students have been using conditional clauses twice, thrice or even 4 times। 2 3 4 बार यूज कर लेते, सेम टू सेम पैटर्न है ना, if and if, तो ऑब्वियसली आपको उसका स्कोर एडिशनल नहीं मिलता और कटता है। क्यों? क्योंकि सेम रेंज और पैटर्न ऑफ ग्रामर इज बीन रिपीटेड। So to avoid or to save ourselves from repeating same range of grammar as a conditional clause, if there are certain possible kind of replacement, तो ये replacement आपको compulsory use करना ही है, तब जाके आपकी range of grammar है automatically maintain होगी। So if का first replacement is in the event that, इन दी इवन दैट आप ऐसे यूज करेंगे तो इसको भी कंडीशनल क्लॉज ही कंसीडर किया जाएगा। इट इज अ कंडीशनल क्लॉज, किया जाएगा नहीं, इट इज अ कंडीशनल क्लॉज। सो फर्स्ट इज इन द इवन दैट। फॉर एग्जांपल, इन द इवन दैट द प्रोजेक्ट इज डिलेड, कंटीजेंसी प्लान विल बी एक्टिवेटेड। इफ वाला जो है उसको रिप्लेस कर दिया। सेकंड एग्जांपल, इन द इवन दैट अ टेक्निकल इश्यू अराइजेस, immediate support will be provided। if technical issue arises, immediate support will be provided। तो if को replace कर दिया यहाँ पे in the event that। simple है, just remove if and add in the event that। सेकंड रिप्लेसमेंट इज प्रोवाइडेड दैट। मान लो आपने एक बार इफ यूज किया, सेकंड टाइम आपने यूज किया इन दी इवन दैट, अभी फिर से आपको कंडीशनल, क्योंकि कुछ आइडियाज ऐसी होती है, कुछ ऐसे राइटिंग या फिर स्पीकिंग में कुछ ऐसा होता है कि जहां आपको कंडीशनल क्लॉजेस बारी बारी यूज करने पड़ते हैं। यू विल रिक्वायर टू यूज कंडीशनल क्लॉजेस रिपीटेडली। सो फर्स्ट इज इफ, तो सेकंड आपने करना है इन दी इवन दैट, एंड थर्ड कैन बी दी प्रोवाइडेड दैट। थर्ड पॉसिबल replacement is provided that। for example, provided that proper safety measures are followed, like if the proper safety measures are followed, the risk of accident will decrease। तो if को replace किया provided that के, provided that proper safety measures are followed, the risk of accident will decrease। second example, provided that all stakeholders are on board, the initiative will proceed smoothly। ऑब्वियसली इफ को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। The third possible replacement is assuming that, thinking that, believing that, it is kind of assuming that। Assuming that all variables remain constant, assuming that all variables remain constant, the result should be consistent। second example, assuming that the weather holds up, if the weather holds up, if को यहाँ पे क्या करने हैं, यहाँ पे assuming that the weather holds up, if the weather holds up, the outdoor event will continue as planned। तो assuming that भी हो सकता है। and the fourth replacement is on the condition that, if को replace करना है on the condition that। for example, the agreement will be finalized on the condition that both parties agrees to the term। okay, if both parties agrees to the term, the agreement will be finalized। क्लोजेस को आगे पीछे करना है। ओके, सेकंड एग्जांपल, द प्रोजेक्ट विल प्रोसीड ऑन द कंडीशन दैट द एडिक्वेट रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। सिंपल है, क्लोजेस फ्रेज लाइक कंडीशंस को फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट कर दीजिए, रिप्लेसमेंट ऑफ कंडीशन, एंड यू कैन यूज ऑन द कंडीशन दैट। एंड द नेक्स्ट इज शुड इट बी द केस दैट, शुड इट बी द केस दैट। फॉर एग्जांपल, should it be the case that funding is insufficient, if the funding is insufficient, if should it be the case that funding is insufficient, alternative resources will be sought। second example, should it be the case that the target market shift, a new marketing strategy will be implemented। तो if का यहाँ पे easily हम क्या के replacement दे सकते हैं।
एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सो, SO, सो या फिर therefore हम कई बार यूज करते हैं, पहले सो देन therefore। फर्स्ट कंडीशन हमारी जो है मिस के एक प्रोसीजर है, फर्स्ट क्लोज फिर सो एंड द डिपेंडेंट क्लोज, ऐसे हम यूज करते हैं, या फिर सो को रिप्लेस कर सकते हैं therefore। दो ही वर्ड थे हमारे पास, बट आई एम गोइंग टू गिव यू सम possible formal and lengthy formal replacement। So the first replacement is therefore it can be concluded that, so है उसको replace करते हैं therefore it can be concluded that। It sounds better when someone listens or read your writing, it sounds much better, it sounds a professionality, so therefore it can be concluded that। First example, therefore it can be concluded that renewable energy is a way forward। Second example, therefore it can be concluded that teamwork enhance productivity। सिर्फ है so that teamwork enhance productivity, छोटा सा सेंटेंस होगा, so replace can be therefore it can be concluded that teamwork enhance productivity। First, second is consequently this indicates that, consequently this indicates that। Example, consequently this indicates that a collaborative approach is necessary, so that a collaborative approach is necessary, short हुआ, so consequently this indicates that a collaborative approach is necessary। Second example, consequently this indicates that customer satisfaction should be prioritized। So second, and now move to the third one is as a result of this, so को replace कर सकते हैं हम as a result of this। For example, as a result of this the company has experienced a surge in a profit, so the company has experienced a surge in profit, so को replace कर दिया। as a result of this the company has experienced a surge means upgradation or additional profit। And second example, as a result of this, the team managed to complete the project ahead of schedule, before the timeline, before the deadline। Okay. The fourth is thus it follows that, so को replace कर सकते हैं THUS, thus it follows that। For example, thus it follows that consistent practice leads to a mastery, leads to mastery। And second example, thus it follows that investment in technology is essential for growth, so को ऐसे replacement दे सकते हैं। And the fifth one, the last one is for this reason it becomes evident that, so को replace करना है for this reason comma it becomes evident that, and your outcome means कि जो dependent क्लोज है उसे ऐड करना है, पहला इंडिपेंडेंट एंड देन डिपेंडेंट, और बीच में डालेंगे फॉर द रीजन, सो की जगह फॉर द रीजन, फॉर दिस रीजन इट बिकम्स एविडेंट दैट। एग्जांपल, फॉर दिस रीजन इट बिकम्स एविडेंट दैट एजुकेशन रिफॉर्म्स आर crucial or it is mandatory to required to have a reformation in education। Second example, this for this reason it becomes evident that sustainable practice must be adopted। तो ऐसे यहाँ पे क्या कि सो जो है सो को रिप्लेसमेंट देंगे, therefore सो कंटिन्यूसली बारी बारी हम यूज करते हैं, तो रिपीटेशन, रिपीटेशन इन वर्ड्स, रिपीटेशन इन द वोकैबुलरी एंड रिपीटेशन इन रेंज ऑफ ग्रामर। तो उसको with the help of those formal replacement हम डालेंगे, our score will be increased automatically। And now the number 9, next one is and, and and बहुत ज्यादा यूज होता है while in speaking। मैंने सुना है बहुत बच्चों को जब अप्रोच when they are in a practical exam or in their practice at class or doing practice at home, एक ही वर्ड यूज होता है मोस्टली, दैट इज and। एक नाउन मिला and, सेकंड नाउन and, थर्ड नाउन and, फोर्थ नाउन and। तो इज रिपीटेशन ऑफ योर वोकेबुलरी इन द सेंस लेक्सिकल रिसोर्सेज का जो रिपीटेशन हो उसमें कटेगा। एंड सेकंड, रेंज ऑफ ग्रामर सेम ही यूज हुआ, तो एंड को रिप्लेस करेंगे हम विद फॉर्मली with the help of formal lines or words, closes phrases। The first replacement is moreover it should be emphasized that। end का करेंगे moreover it should be emphasized that। For example, moreover it should be emphasized that mental health is as important as physical health।
Okay, people are doing something and that mental is important as physical health and तो उसको replace मिल सकता है ऐसे like moreover it should be emphasized that mental health is as important as physical health or physical one. Second example, moreover it should be emphasized that the protection of the environment is everyone's responsibility. ऐसा first end का सेकंड एंड को हम रिप्लेस करेंगे इन एडिशन टू दिस. ओके, लिंकर जो है कोहेसिव डिवाइस है, ये प्रॉपर कोहेसिव डिवाइस है विच हेल्प अस टू जनरेट सीएनसी और मेंटेन द सीएनसी. सो इन एडिशन टू दिस एंड की जगह यूज हो सकता है. फॉर एग्जांपल, इन एडिशन टू दिस द गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड फंड्स फॉर रिसर्च एंड द गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड द फंड फॉर द रिसर्च. तो एंड को रिप्लेस किया हमने इन एडिशन टू दिस. In addition to this, the government has allocated funds for research. Second example, in addition to this, the company has introduced a new employee welfare program which helps employees all over productivity, protection and protection for the family as well as for the society. Okay, and the third one is and का third possible replacement is furthermore. एडिशनली हम जो डालते हैं लिंकर्स तो उसको भी हम एक्सटेंड किए हैं. Furthermore, it is important to highlight that. Furthermore, it is important to highlight that. For example, furthermore, it is important to highlight that public awareness campaigns have been effective. Second example, furthermore, it is important to highlight that technological advancements have led to more efficient production, more quick production, efficient, durable production. Okay, so ऐसे replacement मिल सकता है. And the fourth one is not only this but also, not only but also complex sentence है उसको हम ends के साथ भी जोड़ सकते हैं. It can be replaced easily with and. The and उसे रिप्लेस करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो मीन्स के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पैटर्न हमारे बनेगी. जैसे कि आइदर और है, नाइदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, बोथ है, दो, ऑल्दो, ऐसे वर्ड्स जब हम डालते हैं मीन्स के कंडीशनल डालते हैं इट टर्न्स इनटू द सेंटेंस टर्न्स इनटू अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न. तो एंड का रिप्लेसमेंट यहाँ हो सकता है नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्सपांडेड इट्स सर्विस globally. Second example, not only this but also the initiative has contributed to job creation in local community, employment creation or job creation in local community. Replacement is along with this, it is worth mentioning that, along with this it is worth mentioning that. For example, along with this it is worth mentioning that technological advances have accelerated progression or progress. Second example, along with this, it is worth mentioning that partnership with other industries have driven innovation. So इसे यहाँ पे end को हम replacement दे सकते हैं. And the last for this video is also या फिर टू. हमारे पास दो ही है, else also and t double और टू. एक आया, दूसरा आया, फिर से पहला दूसरा. रिपीटेशन, ग्रामर रिपीटेशन, लेक्सिकल रिसोर्सेज और फिर सोचते रहते हैं स्कोर कम क्यों आया. तो ऑल्सो को रिप्लेस करेंगे विथ पॉसिबल रिप्लेसमेंट. द फर्स्ट वन इज एडिशनल. जो आप लिंकर यूज करते हो वही है, इट इज कॉमन. हम जो कोहेसिव डिवाइसेस यूज करते हैं वही है कॉमन वर्ड. एंड दी ऑल्सो को रिप्लेस करेंगे विथ एडिशनली, एडिशनल, फर्दरमोर. ओके, फर्स्ट एग्जांपल, एडिशनली students are encouraged to participate in extracurricular activities. like also की जगह हमने रिप्लेस कर दिया additionally. Second example, additionally the company offers flexible working hours to accommodate employees needs. Okay, they have the flexible working schedule for the employees, for the flexibility, flexible work schedule. for and also को replace हो सकता है additionally. First replacement is as well as this, as well as. Part A is as well as important than these or that. कुछ भी आप यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड क्लोजेस को या फिर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लोजेस को आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो. फर्स्ट एग्जांपल इज as well as these
training program have been introduced to improve skills. Second example, as well as these, new technology is being implemented to enhance productivity. So second था. Third is, it is also worth noticing that or noting down that. ऐसे यहाँ पे आप बना सकते हैं. So it is also worth noting that. For example, it is also worth noting that program has received international recognition. Second example, it is also worth noting that the company has made significant strides in reducing its carbon footprint. Like pollution को replace किया है carbon footprint. ऐसे words या verbs यहाँ पे आप like repetition से बचने के लिए like company has introduced significant strides in reducing air pollution, reducing pollution. So उसको हम यहाँ पे replace कर सकते हैं carbon footprint. Okay, and the fourth one is in a similar vein. CRP verb हो सकता है. For example, in a similar vein, other industries are adopting sustainable practices. Second example, in a similar vein, several countries have implemented stricter regulations to reduce pollution. The last one is furthermore, it must be stated that. Also to को यहाँ पे replace कर सकते हैं. Furthermore, एडिशनली हम बोलते हैं लिखते हैं. सो फर्दरमोर एडिशनल थोड़ा सा उसे भी एक्सटेंड कीजिए. फर्दरमोर इट मस्ट बी स्टेटेड दैट. फॉर एग्जांपल, फर्दरमोर इट मस्ट बी स्टेटेड दैट द पॉलिसी इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेजेस. सेकंड एग्जांपल, फर्दरमोर इट मस्ट बी स्टेटेड दैट द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च आर येट टू बी फुली एनालाइज्ड. जो word है very, V-E-R-Y, very, majority of students have been using in their writing and speaking oftenly, और मीन्स के हम freely use करते हैं. कहीं पे भी हम very डाल देते हैं. तो very से क्या होता है? Suppose I am describing something which is important और मुझे उसका वैल्यू दिखाना important है, लेकिन उससे ज्यादा उसको मुझे प्रेशराइज करना है. तो क्या करते हैं? Very important. That means क्या होता है जब हम ये वर्ड यूज करते हैं वेरी, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? लाइक आई एम सेइंग द असाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट शोज द लैक ऑफ वोकैबुलरी क्लियरली. मीन्स के हमारे पास जो वैल्यू है उसकी द इंपॉर्टेंस दिखानी है कितनी है, तो वैल्यू को डिस्क्राइब करने के लिए कि प्रॉपर वर्ड नहीं था, तो उसकी वजह से हमने यूज कर दिया वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऐसे वर्ड से बचिए. पहली सीखे या फिर दैट इज द टिप कि आप कहीं पे भी आपके राइटिंग और स्पीकिंग में वेरी नहीं यूज करेंगे. उसकी जगह क्या करेंगे? वेरी की जगह द फर्स्ट वर्ड इज एक्सेप्शनली. एक्सेप्शनली जो वर्ड है वो हम फॉर्मली वेरी को रिप्लेस कर सकते हैं. कैसे? लेट्स चेक द एग्जांपल. द टीचर वाज exceptionally knowledgeable about the subject. The teacher was very knowledgeable. Very means कि knowledgeable है, फिर कितने हैं? नो क्लैरिफिकेशन. यहाँ से क्या है कि जो इमोशन है इंपॉर्टेंट जो हम दिखा रहे हैं कि द टीचर इज वेरी नॉलेजेबल. वेरी मीन्स कितने, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे एक्सेप्शनल. द टीचर वाज एक्सेप्शनली नॉलेजेबल अबाउट द सब्जेक्ट. या फिर सेकंड एग्जांपल, द एथलीट परफॉर्म्ड exceptionally well during the competition. Exceptionally well, very well, exceptionally well. तो अपनी नोटबुक में ये वर्ड नोट कर दीजिए और रूटीन में यूज करना शुरू कीजिए. कि आपको कहीं पे भी व्हेन यू आर ट्राइंग टू यूज वेरी, तो उसकी जगह यूज करेंगे हम फर्स्ट इज एक्सेप्शनल. सेकंड वर्ड इज रिमार्केबली. हमने एक जगह मान लो कि एक्सेप्शनली यूज कर लिया, तो सेकंड टाइम राइटिंग और स्पीकिंग में यूज करेंगे हम रिमार्केबली. फॉर एग्जाम्पल, द एक्सपेरिमेंट वॉज रिमार्केबली सक्सेसफुल. इट वॉज अ रिमार्केबल सक्सेसफुल. सेकंड, द टीम अचीव्ड रिमार्केबली हाई सेल्स इन अ क्वार्टर. सो वेरी को यहाँ हम विद द हेल्प ऑफ लाइक एक्सेप्शनली या फिर रिमार्केबली ऐसे फॉर्मल वर्ड से या फॉर्मल वोकैबुलरी से उसे हम like replace कर सकते हैं. And third possible replacement is incredibly. Okay, third one is incredibly. Very को हम incredibly से replace कर सकते हैं. कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं कि she performed very well under pressure. Very well.
तो वेरी जो है वेल के आगे उसको हम निकाल देंगे और डालेंगे इनक्रेडिबली। शी परफॉर्म इनक्रेडिबली वेल अंडर प्रेशर। और सेकंड एग्जांपल, द लैंडस्केप लुक्ड इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल एट सनसेट। इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, कितना, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है। मीन्स के हमें जो कहना है इमोशन, वी कैन नॉट पास द परफेक्ट इमोशन, सो यहाँ होगा वेरी इंपॉर्टेंट को हम करेंगे इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट या फिर इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। Fourth possible like a replacement is significantly. The fourth one is significantly. For example, the results have significantly improved over time. The results have significantly improved over time. So significantly improved को very improved करेंगे, कुछ emotion नहीं आता है. So there we have to use the adverb, the formal replacement as an adverb significantly. Second example, the new strategy has very increased productivity. Very, again normal, so the new strategy has significantly increased productivity. Significantly adverb है, उसे हम very को replace करेंगे. And the fifth one is extremely my favorite, क्योंकि बहुत सारे ऐसे words है जो हमें promptly while speaking याद नहीं आते. We cannot recollect or regain those words. So मैं ये जो वर्ड है एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। कैसे? एग्जाम्पल, द प्रोजेक्ट वॉज वेरी वेल रिसीव्ड बाय स्टेक होल्डर। वेरी वेल रिसीव्ड, सो एक्सट्रीमली रिसीव्ड, सिंपल है। और सेकंड एग्जाम्पल, द इवेंट वॉज एक्सट्रीमली वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ran स्मूथली। सो एक्सट्रीमली वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी 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 हम यहाँ यूज करेंगे, उसकी जगह डालेंगे हम एक्सट्रीमली। तो ये थे 5 possible replacement of very. The first one is exceptionally, second is remarkably, the third one is incredibly, fourth one is significantly, and the fifth one, my favorite kind of, is extremely. तो ये थे very के kind of replacement, formal replacement और सेकंड वर्ड देखता हूँ। लेट्स चेक दी के मोस्टली स्टूडेंट यूज करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। समथिंग इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट 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 रिपीट होता है, क्योंकि हमारे सारे स्पीकिंग एंड राइटिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स और वेरी काइंड ऑफ टॉपिक के जहां हमें ये वर्ड इम्पोर्टेंट कोई किसी ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट को प्रेशराइज करने के लिए टू प्रोवाइड एक्सट्रीम वैल्यू वी हैव टू यूज इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट को हम कैसे रिप्लेस करेंगे? व्हाट आर दी सर्टेन वोकैबुलरी? सो अमंग देम द फर्स्ट रिप्लेसमेंट फ्रेज, a formal replacement phrase is of paramount significance. Important को हम replace करेंगे of paramount significance. For example, a climate change is, a climate change is of paramount significance in today's world. Okay, it is like important, so of paramount significance. Second example, the safety of employees is important to the company, is important to the company, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे with of paramount significance for say the safety of employees is of paramount significance to the company. So first था second replacement, it can be of vital importance, only important है, vital importance. For example, education is important for social development. Important for social development, important को यहाँ रिप्लेस करेंगे of vital importance. Let's say education is of vital importance for social development. Second example, it is of vital importance that we address mental health issue in a workplace. So second possible important का हुआ of vital. And the third replacement is crucial to the understanding of, crucial to the understanding of. For example, historical context is important of current event. So यहाँ पे हो सकता है कि historical context is crucial to the understanding of current events. Second example, a solid foundation. A solid foundation is basic mathematics in is crucial to the understanding of more advanced subject. तो ये था हमारा थर्ड. The fourth is, fourth replacement of importance is
indispensable in context of, indispensable in context of. For example, this tool is important of modern engineering और important for modern engineering, तो उसको रिप्लेस करेंगे ये जो फ्रेज दिया उससे, दिस टूल इज indispensable in the context of modern engineering. Second example, clear communication. Clear communication is important for international businesses. So replacement डालेंगे उसका कि clear communication is indispensable in the context of international businesses. And the fifth possible replacement phrase is essential to achieving. important को कर देंगे essential to achieving something. फिर हमारा जो object है या subject है या फिर noun है वो add करेंगे. For example, collaboration is important to achieve success in large scale project. important replace करेंगे उसको कि collaboration is essential to achieving success in large scale project. Second example, regular feedback is essential to achieving continuous improvement in any organization. So for that way, ये जो 5 possible replacement phrase थे, आप उनमें से 2-3 अपने choice के पकड़ लीजिए, सीख लीजिए, डे टू डे लाइफ में उसको प्रैक्टिस कीजिए, देन यू विल हैव अ ग्रिप ओवर दोज वर्ड्स, दोज वोकैबुलरी, दोज क्लोजेस, दोज फ्रेजेस, एंड यू विल बी एबल टू यूज इन योर स्पीकिंग एंड राइटिंग स्मूथली, इफेक्टिवली एंड एरर फ्री. जैसे यहाँ पे क्या है कि जो वर्ब्स है या फिर हमारे पास जो नॉर्मल वर्ड्स थे उसको हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है. दैट इन अ प्रॉपर वे ऑफ अप्रोच, फॉर्मल वे ऑफ अप्रोचिंग मीन्स के हमने राइटिंग और हमारी स्पीकिंग में ऐसे यहाँ पे कुछ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पॉसिबल क्लोजेस, फ्रेजेस, फॉर्मल क्लोजेस, फॉर्मल फ्रेजेस, ऐसे हम रिप्लेसमेंट देंगे ताकि, और एज ए रिजल्ट हमारा जो राइटिंग टास्क है और स्पीकिंग टास्क है उसमें हम 2 जगह हमारा स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं. वी कैन एनहेंस द स्कोर इन 2 वे. फर्स्ट इज लाइक लेक्सिकल रिसोर्सेज, ऐसे वर्ब यूज करेंगे तो क्या होगा, ऐसे क्लोजेस फ्रेजेस हमारी वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी की जो रिक्वायरमेंट है, फॉर्मल वोकैबुलरी की रिक्वायरमेंट वो क्लियर होगी. एंड सेकंड, रेंज इन ग्रामर, क्योंकि एक ही वर्ड, एक ही टाइप के लिंकर्स या फिर कनेक्टर यूज करेंगे तो सेम पैटर्न ऑफ ग्रामर वुड बी रिपीटेड. तो रिपीटेशन ऑफ ग्रामर से भी हम बचेंगे एंड वैरायटी ऑफ ग्रामर जनरेट होगा, विच विल हेल्प अस टू जनरेट अ हाई स्कोर. उसकी वजह से हमारा जो स्कोर है वो बढ़ेगा.